Morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Shweta Mudgal, a representative of Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, today we are going to start History Chapter 9. Take out your books. So students, we will start chapter number 9, that is the making of the national movement in between 1870s to 1947. In this video, that is video number 1, we are going to cover the following topics and the rest topics will be covered in the next video, that will be video number 2. The emergence of the nationalism, a nation in the making. Number 3, freedom is our birthright. Number 4, the growth of mass nationalism. Number 5, the advent of Mahatma Gandhi, and the number 6, the Royal Satyagraha. So take out your books, it is page number 110, the emergence of nationalism. What is this country of India? Ask for whom it is meant, and the answer that gradually emerged that India was the people of India, where all the people, irrespective of class, color, gender, besides. What happened, students? At that time, Britishers were trying or exercising control over the resources of India. If we talk about this chapter, is basically a kind of summary of the national movement in India. There was a kind of discontentment among the Indians. उनके अंदर एक गुस्सा था. What was the reason? We will cover in this chapter. First of all, I told you that Britishers were exercising control over the resources of India. This was also a reason. If we talk about in between 1870s and 1880s, many political associations started forming. The important ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the All India National Congress, the Indian Association, and the Madras Mahajan Sabha. Okay. So what happened in Pune Sarvajanik Sabha? The word Sarvajanik literally means for all the people. Here you can write the internal question also, which I will tell you just after. So we are talking about कि उनके अंदर गुस्सा था, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनना स्टार्ट हो गए थे. अब यहाँ पर बच्चों 3 एक्ट पास हुए जिसकी वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ता गया. वो क्या थे? इन 1878 आर्म्स एक्ट was passed. According to that, Indians disallowing Indians from possessing arms. This Arms Act disallowing Indians from possessing arms. And in the same year, Vernacular Press Act was passed. Vernacular Press Act. This is a kind of effort to silence those who were critical of the government. Means they couldn't write anything objectionable in the newspaper. And the third one was Ilbert Bill. Ilbert Bill. Ilbert Bill में बच्चों जो इंडियन जजेस थे और जो ब्रिटिश जजेस थे उनको बोला गया था कि इक्वल राइट दिया जाए. जब ये बिल आया तो लोगों ने उसको बहुत अपोज किया, ब्रिटिशर्स ने, और बोला कि ये बिल को वापस ले जाओ. दिस वॉज टेकन एज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इन तीनों की वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा हो गया. ठीक है. Now the Indian National Congress was established. Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the India met at Delhi in 1885. The Indian National Congress was formed in 1885. 72 delegates met at that time and they established Indian National Congress, जिसने कि Indians के लिए बहुत अच्छे से काम किया. So here we have covered the emergence of nationalism. Now the next topic is a nation in the making. Students, if we talk about it, in the first 20 years, Congress was moderate
Congress was moderate in its style, in its application, in its methods. Okay, they believed in pleading, requesting, and demanding. So what they demanded, first of all, they wanted that Indians to be placed at high position in the government. For that, they wanted that civil exams India में held होने चाहिए. So Indians could also participate in that. After that, they demanded the separation of judiciary from the execution. Okay, Congress was moderate, as I have told you. Their style, their application, and the methods were different. They demanded judiciary, separation of judiciary from the execution, and the cut of military expenditure. They demanded cut in military expenditure and more funds for irrigation. ठीक है, more funds for irrigation, and they also raised number of economic issues. Moderates wanted to develop awareness among the people about the unjust nature of British rule. For that, they wrote in newspaper, published articles, showed how the British rule was ruining to the or leading to the economic ruin of the country. उनको मेन मोटो ये था कि लोगों को अवेयर कराना और अपनी डिमांड्स, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखकर उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करना. ये इनका मेन मोटो था किसका, मॉडरेट्स का, जो कि फर्स्ट 20 ईयर्स में अगर हम कहेंगे तो जो उनके स्टाइल्स और एप्लीकेशंस थे वो मॉडरेट्स थे. हाउ इट वर डिफरेंट फ्रॉम रेडिकल्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट. Meanwhile, you have to note down question number 1, internal question. That is, what is the literal meaning of Sarvajanik? Okay, that is on page number 110. And the answer is, the literal meaning of Sarvajanik is for all the people. That is internal question number 1. Now we are going to cover the next topic, that is freedom is our birthright. Students, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस थी वो 2 ग्रुप्स में थी. एक था मॉडरेट्स और एक की अगर हम बात करें तो रेडिकल्स. देयर वाज जस्ट अ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग देम. देयर मोटो वाज सेम, बट इनके स्टाइल अगर हम कहें, स्टाइल में डिफरेंस था. ये रिक्वेस्ट, प्लीड, डिमांड, इसमें विश्वास करते थे. बट द रेडिकल्स क्रिटिसाइज देम for their politics of prayer. Because they believed in self-reliance and self-constructive work. According to them, it is our right and we shall have it. They were the followers of Gandhiji and the leaders from Punjab, Bengal and the Maharashtra, जिनको कि हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल. They believe in strikes, fight, violence to get their rights. So we can say कि moderates और radicals का स्टाइल डिफरेंट था, उनका मोटो सेम था, उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे. लाला लाजपत राय raised a slogan that freedom is our birthright and we shall have it. Now what happened? In 1907, Viceroy Curzon partitioned Bengal. Bengal का partition कर दिया. And they said they did it because of the administrative convenience, but it was not actually that reason. So, जो लोग थे उनके अंदर इसको लेकर बहुत गुस्सा आया. उस समय बच्चों जो बंगाल था वो बहुत बड़ा था. उड़ीसा का कुछ पार्ट, बिहार का कुछ पार्ट और ईस्टर्न आसाम का पार्ट भी इसके अंदर आता था.
और इन लोगों ने इसका पार्टीशन कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया। अब लोगों ने क्या स्टार्ट किया? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स का बायकॉट किया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट तो बंगाल में हुआ, पर इसके इफेक्ट सब जगह दिखे गए। आंध्र प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश में इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है, 1907 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बायकॉट हुआ। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को अपोज किया एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। क्लियर? नाउ the Muslim Nawabs and the landlords formed the All India Muslim League in 1906 in Dhaka. All India Muslim League, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने स्टार्ट करी? ढाका में मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ने और नवाब्स ने, एंड सपोर्टेड पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन को इन लोगों ने सपोर्ट किया। इफ वी टॉक अबाउट इन 1907 द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स एंड इन 1915 द टू ग्रुप्स reunited. Okay, and the Muslims and the Hindus signed the historic Lucknow Pact. Historic Lucknow Pact and decided to work all together. The historic Lucknow Pact was signed there. After 1919, the struggle against British, the British gradually became a mass movement, including women, students, children, tribal, peasants, and occasionally sometimes factory workers. They all joined the struggle against the Britishers. So we could say that it became a mass movement after 1919. At that time, First World War alerted the political and economic situation in India, बिकॉज इस समय जो वॉर एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंक्रीज्ड वॉर एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज, किसकी वजह से? इंक्रीज वॉर एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज led to a huge rises in the prices and created a problem for common people. And if we talk about, on the other hand, business groups reaped fabulous profit because there was a demand of industrial goods like jute bags, rails,
and cloth and decline in import. इंपोर्ट में डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। तो कॉमन पीपल के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके ऊपर टैक्सेस लगने लग गए थे, चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, वॉर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इनफैक्ट लोगों को, कॉमन पीपल ऑल्सो रिक्वायर्ड कि वो वहाँ पर जाकर उनके लिए लड़ाई लड़ें। Furthermore, in 1917, there was a revolution in Russia. Russian Revolution. News about peasants and the workers, struggles and the ideas of socialism. अब जब ये न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी कि किस तरह के वहाँ के पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने स्ट्रगल किया, अपोज किया और सोशलिज्म का आइडिया आया, दैट सर्कुलेटेड वाइडली एंड इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट इंडियन नेशनलिस्ट पे भी पड़ा। सो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से हुआ, वॉर एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए उस समय। अब इसी समय महात्मा गांधी का आना हुआ, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी aged 46 arrived in India in 1915 from South Africa। स्टार्टिंग में जब वो आए तो उन्होंने सब जगह जाकर देखा, खेड़ा में गए, चंपारण में गए, अहमदाबाद में गए और वो वहाँ पर मिले वल्लभ भाई पटेल से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, प्रॉब्लम्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूरा एक विजुलेशन लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस जगह पर क्या रिक्वायरमेंट है। देन वी कुड से दैट ही बिकेम अ मास लीडर। लोगों को उनके अंदर इतना विश्वास आ गया। In Ahmedabad, he led a successful mill worker strike. मिल्क वर्कर की जो स्ट्राइक्स थी 1918 में, वो उन्होंने वहाँ पर शुरू करी। Now the Royal सत्याग्रह and the last point we have covered the advent of Mahatma Gandhi. He became a mass leader and the Royal सत्याग्रह. Student, what happened? If we talk about गांधी जी और रॉयल सत्याग्रह के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जलियांवाला बाग में जब लोग प्रोटेस्ट होने के लिए इकट्ठा हुए थे तो जनरल डायर ने वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा गोलियां मारी थी और एग्जिट का गेट बंद कर दिया था। उस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। नाउ इन 1919 गांधी जी gave a call for सत्याग्रह। अब गांधी जी ने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया? सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट। दिस वॉज ऑल्सो नोन एज रॉयल सत्याग्रह। ठीक है, रॉयल एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह स्टार्ट किया, which was just passed by the Britishers. Rowlatt Act was just passed by the Britishers. So in 1919, Gandhi ji gave a call for satyagrah against Rowlatt Act, which had just passed by the Britishers and which curbed the fundamental rights such as freedom of expression and freedom of speech and strengthened the police powers. So they opposed it. Rowlatt Act was opposed at that time. So students, the Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British. First, in April 1919, there was a number of demonstrations and hartals in the country which was brutally suppressed by the British. At that time, one more important action was done. Rabindranath Tagore was highly touched by this and Rabindranath Tagore was highly touched and to express his pain and anger for the country,
he renounced knighthood. इनको जो नाइटहुड मिला था उसको उन्होंने छोड़ दिया. Okay, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger for the country by renouncing his knighthood. So students, we have covered the Royal Satyagraha. Now the one more important thing, during the Royal Satyagraha के बीच में the participants tried to ensure the Hindus and the Muslims were united in the fight against British rule. यहाँ पर लोगों ने ये सोचा कि हिंदू और मुस्लिम अगर यूनाइट हो जाएं, और ये हमारे गांधी जी का भी सपना था, वो भी यही सोचते थे, जो कि लिखा दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव इन द कंट्री. इन्होंने हमेशा देखा था कि हिंदू, उनका एक सपना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स के लोग भी. ही वॉज कीन दैट हिंदूज एंड द मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर एंड एनी जस्ट कॉज, ये एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होकर काम करें. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल this and the remaining topics will be covered in the next video. Read it carefully. Thank you.